Hello friends, welcome back to series of lecture. This is the 29th lecture of this series of CPC. In this we are start with the topic foreign judgment. अब इसमें आप प्रोविजंस देख लो पहले. इसमें तो आप एक तो आपको सेक्शन 2 क्लॉज 5 और सेक्शन 2 क्लॉज 6 पढ़ना चाहिए. It defines the foreign judgment and foreign court definition. Then 13-14 you have to read. Then 44A relates to the execution of the foreign judgment. This you have to read. और एविडेंस एक्ट का सेक्शन 77 थोड़ा सा और मेनली 86 इंडियन एविडेंस एक्ट. तो इतना पढ़ना होगा आपको इस टॉपिक में. और इसमें मेन सेक्शन 13, 14, 44A एंड सेक्शन 86. नाउ टेक आउट क्लॉज 5 ऑफ सेक्शन 2. Section 2, Foreign Court. Foreign court means a court situated outside India and not established or continued by the authority of the central government. Means a court which is created by any other foreign country and which is not created by Indian government, by the central government. And next is foreign judgment. Clause 6. Foreign judgment means the judgment of a foreign court. Means a judgment which is passed by a court which is not established by central government of India or Indian government. ठीक. अब इधर से आप move on to section 13. A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. ठीक. तो पहले तो इस पैराग्राफ को आप समझो. They are saying a foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigation under the same title. So this is the elements. So they are saying that the parties should be the same. These are the elements. They are saying same parties or the parties claiming under the same parties. या तो parties बिल्कुल same हो या फिर जो सूट के parties हैं और foreign का कोर्ट के जो जजमेंट है उसकी पार्टीज उसके अंडर क्लेम कर रहे हैं. ठीक. Then they are talking about same title. And then there has to be an existence of foreign judgment. Means a foreign judgment is a judgment by a foreign court. Then they are saying अगर ये एलिमेंट सारे प्रूव हो गए then the foreign judgment will be conclusive on the Indian courts. Foreign judgment will be conclusive upon the Indian courts with respect to what? With respect to any matter directly adjudicated upon by the foreign court. वो लिखा है यहाँ पर conclusive on the Indian courts, conclusive on any matter regarding, conclusive in the Indian courts regarding any matter directly adjudicated upon. Conclusive in Indian courts regarding any matter directly adjudicated upon. So if you read the paragraph once again, with respect to any matter directly adjudicated upon. फिर से पढ़ो इस पहले पैराग्राफ को. A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby. Conclusive as to any matter thereby. Thereby means what? By the foreign court. By the foreign judgment. A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon. मतलब जो conclusive होगा वो उन matters पे लगेगा जो कि directly adjudicated upon between the same parties or between parties under whom they or any of them claim litigating under the same title. और same parties claiming under or same title that you understand already. Res judicata में भी पढ़ा है और res sub judice में भी पढ़ा है. So these elements you understand that parties should be the same, and if they are not the same then the parties
in the suit, parties in the suit shall be claiming under the parties of foreign suit. The parties in this suit shall be claiming under the parties in the foreign suit, and then title to be the same. Title should be the same. Take the parties should be the same, and if the parties are not same, then the parties which are in the earlier foreign suit, then the parties here in this suit shall be claiming under the parties of the foreign suit, and then title to be the same. So in these elements I did not need to be explained again. I expect that you already know all these. A foreign judgment, we have just seen a judgment by a foreign court. That also you already know. Now you have to understand what is the meaning of conclusive and what is the meaning of any matter directly adjudicated upon. Any matter directly adjudicated upon. Because they are not saying that the foreign judgment will apply as res judicata on Indian courts. ये res judicata नहीं लगा रहे फॉरेन जजमेंट. जैसे इंडियन कोर्ट में एक सूट डिसाइड हो गया बिटवीन द सेम पार्टीज, तो अब सब्सिक्वेंट सूट पर res judicata लगेगा. अब लेकिन अगर वही जजमेंट अगर पास्ड बाय फॉरेन कोर्ट, देन res judicata विल नॉट अप्लाई. बिकॉज अगर res judicata लगेगा तो मीन्स व्हाट, the Indian court is incompetent to try. So they are not saying that the Indian court will be incompetent to try. They are not saying that Indian court shall not try. But they are simply saying कि Indian court के ऊपर the foreign judgment will apply as a conclusive proof of what? Of any matter directly adjudicated upon. Any matter directly adjudicated upon. अब सिचुएशन इज लाइक दिस, आई टेल यू. अब सिचुएशन मान लो, एक एग्जांपल लेते हैं. मान लो H और W के बीच US में इनके बीच एक डिवोर्स पिटीशन फाइल हुआ एंड डिक्री ऑफ डिवोर्स वाज ग्रांटेड. ठीक, डिक्री ऑफ डिवोर्स वाज ग्रांटेड. H ने डिवोर्स पिटीशन फाइल किया था W के खिलाफ इन अ फॉरेन कोर्ट, और फॉरेन कोर्ट ने सुनवाई करने के बाद डिक्री फॉर डिवोर्स दे दिया. अब नाउ इन इंडिया W एंड H, अब सपोज ये इंडिया US से इंडिया आ गए. पहले US में डोमिसाइल थे, अब दे आर सेटल्ड इन इंडिया, एंड इन इंडिया W फाइल्स अ सूट अगेंस्ट H फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. W ने इंडिया में आकर सूट किया है H के खिलाफ फॉर द रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स. अब H का ऑब्जेक्शन है दैट आई एम नो मोर हस्बैंड टू हर बिकॉज आई हैव ऑलरेडी गॉट डिवोर्स. मेरा डिवोर्स हो चुका है एंड आई एम नॉट हर हस्बैंड एंड देयरफॉर दिस सूट शैल बी डिसमिस्ड. तो वो करेगा ये क्लेम दैट आई एम नॉट हस्बैंड ऑफ हर, देयरफॉर दिस सूट शैल बी डिसमिस्ड. Now the main issue is what? Whether H is the lawfully wedded husband to W or not. Because he is saying I am not the husband and W says he is the husband. So whether he is the lawfully wedded husband or not at present, H says I am not. And W says he is. अब H इस फॉरेन जजमेंट का हवाला देता है दैट इन फॉरेन कोर्ट देयर इज अ सूट बिटवीन मी एंड हर एंड आई ऑलरेडी गॉट अ डिवोर्स फ्रॉम हर. अब अगर रेस जुडिकाटा लगाते तो मेन जो इशू है ना, वेदर H इज द हस्बैंड ऑफ W और नॉट, तो इस इशू पर द कोर्ट विल बिकम इनकम्पिटेंट टू ट्राई. ध्यान से समझिएगा इसको. आप अगर आप रेस जुडिकाटा लगाते फॉरेन जजमेंट का, इफ यू अप्लाई द रेस जुडिकाटा ऑफ द फॉरेन जजमेंट, देन द इशू ऑफ वेदर ही इज द हस्बैंड ऑफ W और नॉट, then on that issue the court
will be incompetent to try because of the res judicata, because the foreign court has already decided. ठीक, but here the res judicata is not applicable because they are saying foreign judgment shall be conclusive upon that particular matter. What is meant by conclusive? अगर आप conclusive proof की बात करें, a fact is considered to be conclusive proof. If a fact is considered to be a conclusive proof, then the rebuttal of that fact is not possible. The rebuttal of that fact is not possible. उसका आप rebuttal नहीं कर सकते. If I proved a fact, then the opposite party cannot rebut that. The conclusive proof in Evidence Act means any such fact which is proved. Any such fact which is proved cannot be rebutted by the opposite party. That is what is called the conclusive proof. अब H क्या करेगा? उस फॉरेन जजमेंट की कॉपी लगाएगा कोर्ट में. इंडियन कोर्ट में H फॉरेन जजमेंट की कॉपी लगाएगा, सर्टिफाइड कॉपी, और उससे वो प्रूव करेगा कि मैं पहले डिवोर्स ले चुका हूँ. अब यहाँ पर जैसे ही उसने फॉरेन जजमेंट की कॉपी लगाई और कोर्ट सेटिस्फाइड हो गया that there is a foreign judgment which is properly passed, etc., then that foreign judgment on the issue as to whether he is a husband or not, on that issue the foreign judgment will become a conclusive proof. Means एक बार हस्बैंड ने वो प्रूव कर दिया फॉरेन जजमेंट that he has been divorced, the husband has been divorced, and now the court will not allow W to give evidences to rebut that fact. The court will not allow W to give evidences to rebut that fact. So that is what is the implication of conclusive proof. The court is competent to try. Court is competent to try, but still the moment conclusive evidence वाला document is proved, thereafter the opposite party will not get an opportunity to rebut that fact. That is what the meaning of conclusive proof. अब दूसरी बात एक और जो ऊपर ये लिखा है, any matter directly adjudicated upon. तो इसका क्या मतलब होता है? अब here they are saying directly adjudicated upon means any issue which was actually raised in the former court. उस पर जो कोर्ट ने एडजुकेट किया है उस पर सेक्शन 13 लगेगा. लेकिन मान लो एक इशू है जो कि कंस्ट्रक्टिवली इन इशू था लेकिन रेज नहीं हुआ, जैसे कंस्ट्रक्टिव रेज जूडिकाटा वाला एग्जांपल. तो वैसे इशूज जो रेज नहीं किए गए थे उन पे देयर इज नो डायरेक्ट एडजुडिकेशन, and therefore on those issues the conclusive proof of foreign judgment will not apply. ठीक, तो ये सब अभी आपको लिखवाऊंगा मैं. पहले जो सेक्शन का लैंग्वेज है वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ. Now suppose in the foreign court there were 4 issues between the parties, but only 2 of them were raised and 2 of them were not raised, which the party ought to have raised but the party not raised. अब इंडियन कोर्ट में जब सूट होगा तो which of these 4 will apply as conclusive proof? Only those 2 which were directly adjudicated upon, means only those 2 which were actually raised and upon which the court took evidences and actually decided the issues. But those issues which were constructively in issue, which were not raised, which are implied issues, those issues which are constructively in issue, which were not raised, they were implied issues. Those issues, they will not fall under section 13. That is the difference between the res judicata and conclusive character of foreign judgment. तो res judicata में तो आपका कंस्ट्रक्टिव res judicata उन इशूज पर भी लगता है जो कि नहीं रेज किया था, उन इशूज पर भी लगता है जो आपने रेज नहीं किया था. लेकिन फॉरेन जजमेंट का कंक्लूसिव प्रूफ विल ओनली अप्लाई अपॉन दोज इशूज विच वर एक्चुअली एंड डायरेक्टली रेज्ड एंड एडजुडिकेटेड अपॉन. ठीक, फिर से देखिए आप इसको द लैंग्वेज.
A foreign judgment shall be conclusive as to any matter thereby directly adjudicated upon. Now the keyword that you have to note is shall be conclusive. They are saying shall be. कोर्ट का डिस्क्रिशन नहीं है. Foreign judgment shall be conclusive. Foreign judgment shall be conclusive as to any matter. Conclusive of what? Conclusive upon what? Any matter directly adjudicated upon. ठीक. Directly adjudicated upon. Between the same parties, etc., etc. That you have already understand. Mainly this we have to see. Directly adjudicated upon. मेरे ख्याल से आपको अब तक समझ में आ जाना चाहिए. Directly adjudicated upon means फॉरेन कोर्ट में जो इशूज सूट में एक्चुअली रेज किए गए थे, कोर्ट ने एडजुडिकेशन क्या है? टू एडजुडिकेट मीन्स व्हाट? टू अप्रेज द एविडेंसेस, टू अप्लाई जुडिशियल माइंड and then pass the judgment. To appraise the evidences, apply the judicial mind and then pass the judgment. That is what is called the adjudicated upon. तो फॉरेन कोर्ट में जिन मैटर्स को कोर्ट ने एक्चुअली डायरेक्टली जिन मैटर्स को डायरेक्टली एडजुडिकेट किया है, they will fall under section 13. So constructive issues or implied issues, they will not fall under section 13 unlike section 11. ठीक. unlike section 11 जहाँ पर constructive issues पे भी res judicata लगता है. ठीक. and the second thing I told you was it shall be conclusive. अब वो ऐसा भी लिख सकते थे that no suit shall be tried in India upon an issue which were directly adjudicated upon in a foreign court. ठीक. तो अगर ऐसा लिखते वो, then the Indian court would have been incompetent to try that issue. लेकिन वैसा नहीं लिखा. They are saying it shall be a conclusive proof. Means direct section 11 का जो res judicata है, that will not apply, but the broad principle of res judicata that will apply upon section 13 या अंडर सेक्शन 13. तो फॉरेन कोर्ट का जो जजमेंट है वो डायरेक्टली रेस जुडिकाटा सेक्शन 11 वाला तो नहीं लगाएगा, लेकिन ब्रॉड प्रिंसिपल्स ऑफ अवॉइडिंग द मल्टीप्लिसिटी ऑफ प्रोसीडिंग्स एक्सेट्रा दैट डज अप्लाई. व्हाट इज मीन्ड बाय कंक्लूसिव? आई एम वंस अगेन एग्जामिनिंग. यूँ किसी भी बात का कंक्लूसिव होने का मतलब, किसी भी बात का कंक्लूसिव होने का मतलब है जैसे इंडियन एविडेंस एक्ट में सेक्शन 112 या 113 या सेक्शन 41. जैसे आप सेक्शन 112 इंडियन एविडेंस एक्ट में याद करो, व्हाट सेक्शन 112 सेज? सेक्शन 112 इज बेसिकली शादी के दौरान या उसके 280 दिनों के अंदर अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो इट शैल बी कंक्लूसिव प्रूफ ऑफ द फैक्ट दैट द हस्बैंड इज बायोलॉजिकल फादर ऑफ चाइल्ड. तो यही तो है कंक्लूसिव प्रूफ. अनलेस ही डज नॉट प्रूव दैट आई डिड नॉट हैव एक्सेस टू द वाइफ व्हेन शी हैव गॉटन द चाइल्ड. सो कंक्लूसिव प्रूफ मीन्स व्हाट? एक बार जो सारे फैक्ट्स प्रूव कर दिए और वो मेन फैक्ट वो प्रूव हो गया, उसके बाद रिवर्टल इज नॉट पॉसिबल. दैट इज व्हाट द मीनिंग ऑफ कंक्लूसिव प्रूफ. अगेन आई एम टेकिंग द सेम एग्जांपल. H and W, they have got the divorce between them in a foreign court. अब ये फॉरेन कोर्ट में क्या करने गए थे वो अभी मत सोचो. अब हो सकता है ये दोनों रहने के लिए गए हों वहाँ पर 10 साल के लिए. तो डोमिसाइल्ड है फॉरेन कंट्री में, तो ऑब्वियसली द फॉरेन कोर्ट विल हैव ज्यूरिडिक्शन. तो हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर ही ये फॉरेन कोर्ट उनको डिवोर्स देगा. अगर इनकी शादी हिंदू मैरिज एक्ट में हुई है तो फॉरेन कोर्ट भी इनको हिंदू मैरिज एक्ट में ही डिवोर्स देगा. तो हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार इनको फॉरेन कोर्ट ने डिवोर्स दे दिया. अब उसके बाद इनका 10 साल का टर्म पूरा हो गया. दे केम बैक इन इंडिया. अब इन इंडिया में डब्ल्यू फाइल्ड अ सूट फॉर रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट अगेंस्ट एच. मतलब दे वर स्टेइंग सेपरेटली, so W files a suit that H shall be brought back
the H shall come back to her, or it shall be allowed her to come for him and stay together. अब foreign court में the main issue decided was, suppose क्रूअल्टी के ग्राउंड पर डिवोर्स लिया था, क्रूअल्टी का इशू डिसाइड हो गया, फाइनली डिवोर्स का जो इशू था वो डिसाइड हो गया, एंड दे आर नो मोर हस्बैंड एंड वाइफ। अब एच यहाँ पर कहता है दैट आई एम नॉट अ हस्बैंड टू हर बिकॉज आई ऑलरेडी ऑब्टेन्ड डिवोर्स, सो ही सेज दैट आई एम नॉट अ हस्बैंड of her. He says I am not a husband of her. So this is the issue which the Indian court has to decide. This is the issue which the Indian court has to try. Now the section 13 nowhere says that the Indian court is incompetent to try the issue. It simply says that the foreign judgment wala point which was directly adjudicated will be a conclusive proof. मतलब court is competent to try. तो कोर्ट ये हस्बैंड है कि नहीं इस पर ट्रायल लेगा मतलब दोनों पार्टीज के एविडेंसेस लेगा। ट्रायल का मतलब तो यही हुआ कि दोनों पार्टीज के एविडेंसेस लेगा। अब बर्डन ऑफ प्रूफ किस पर है? एच पर है, क्योंकि एच कह रहा है कि मैं हस्बैंड नहीं हूँ। तो बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट आई एम नॉट द हस्बैंड इज लाइज अपॉन द एच। अब एच नाउ गो ऑन टू प्रोड्यूस द कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट। उसमें ये रूल है कि दैट ही हैज टू प्रोड्यूस द सर्टिफाइड कॉपी। तो वाइफ हमेशा सर्टिफाइड कॉपी के ऑथेंटिसिटी के ऊपर क्वेश्चन मार्क लगा सकती है, उसके सर्टिफाइड कॉपी के ऑथेंटिसिटी पर। फिर उस पर तो हियरिंग होगा कि दैट वेदर द सर्टिफाइड कॉपी इज प्रॉपर जेन्युइन और नॉट। अब उसके बाद अगर एच ने ये प्रूव कर दिया कि दैट इट इज द जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी ऑफ द फॉरेन जजमेंट, and if he proves that I have obtained the divorce from her, the once he proved that I obtained the divorce from her, so means what? The court तो competent था ट्रायल लेने के लिए, तभी तो उसने ये सारे evidences लिए। So now the court finds that actually he proves that I obtained divorce from her, then that fact will becomes a conclusive proof. So the conclusive proof means now the wife cannot give evidences to prove that I am his wife. तो ये प्रूव करने के लिए कि that there was no divorce, वो अदर एविडेंसेस नहीं दे सकती। अब वो उस डॉक्यूमेंट को चैलेंज कर सकती है। फॉरेन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन नहीं था, फॉरेन कोर्ट ने मेरिट पे डिसाइड नहीं किया, इन सब को वो चैलेंज कर सकती है। अब जो कोर्ट कॉम्पिटेंट है इन सब को ट्राई करने के लिए, तभी तो एविडेंसेस लेगा। अब उसके बाद जब एक बार हस्बैंड ने प्रूव कर दिया और सारे एलिमेंट प्रूव हो गए और कर दिया, ये प्रूव कर दिया कि दैट आई हैव एक्चुअली ऑब्टेन्ड डिवोर्स, देन इट बिकम्स कंक्लूसिव। अब उसको रिवर्ट करने के लिए और कोई एविडेंस नहीं दिए जाएंगे, उसको रिवर्ट करने के लिए हम कोई एविडेंस नहीं दे सकते। मीन्स इट इज नाउ सेटल्ड दैट ही इज नो मोर हस्बैंड, and the Indian court accordingly will pass the decree. So this is what meant by conclusively. अगर court incompetent होता, the court will not have taken evidences on the point. The moment the court will find that the foreign judgment, the moment the court will find there is a foreign judgment, court उसके बाद कोई भी evidences नहीं लेता jurisdiction या किसी बात का। लेकिन यहाँ पर द कोर्ट इज टेकिंग एविडेंसेस, और वाइफ के पास 2-3 ऑब्जेक्शंस हो सकते हैं। वन, दैट द सर्टिफाइड कॉपी इज इम्प्रॉपर, और उसके ऊपर कोर्ट एविडेंसेस रिकॉर्ड कर सकता है, वहाँ पर प्रिजम्पशन भी लगेगा। और दूसरा, सेक्शन 13 में बहुत सारे क्लाउजेस दे रखे हैं, एंड वाइफ कैन चैलेंज ऑन either of these clauses. She can say that the foreign court does not have jurisdiction, or the foreign court does not decide on the merits of the case, and the court will take evidences on whether the foreign court does not have jurisdiction or it has not decided on merits. So ये सब evidences try करने के बाद, when the court finally comes to the conclusion that neither of the contention of wife is sustainable, ठीक, अब वो objection क्या, ये नहीं कह रहे कि is my not my husband, उसका तो कोर्ट के पास रिकॉर्ड है that divorce was there, but she is challenging the foreign judgment
by claiming number 1 that this certified copy is not genuine, number 2 the foreign court did not have the jurisdiction, number 3 the foreign court decided without merits, violation of natural justice, etc. So she is challenging the genuineness of correctness of the foreign judgment. अब उसके बाद भी अगर कोर्ट ने डिसाइड कर दिया, इंडियन कोर्ट ने, नो द फॉरेन जजमेंट इज प्रॉपर, देन उसके बाद नाउ शी विल नॉट बी अलाउड एनी एविडेंस टू प्रूव दैट शी इज स्टिल द वाइफ ऑफ द हस्बैंड. So that is the meaning of the conclusive proof. So this is also an application of broad principles of res judicata, क्योंकि इसमें पार्टीज टाइटल वगैरह सब कुछ सेम बता रहा है, तो रेस जुडिकाटा के एलिमेंट्स हैं इसमें, लेकिन फिर भी पूरा सेक्शन 11 पूरा का पूरा यहाँ पर लागू नहीं होता. ठीक, अब इसमें थोड़ा सा लिख लो आप. सेक्शन 13 इज बेस्ड अपॉन द ब्रॉड प्रिंसिपल ऑफ रेस जुडिकाटा wherein a multiplicity of proceedings has to be avoided. Apart from the other elements declared in section 13, the two most important elements to be examined are as follows. The two most important elements to be examined are as follows. Number one, the foreign judgment does not apply as res judicata upon Indian suit. Rather, it applies as a conclusive proof upon an Indian suit related to that particular issue. The Indian court is not declared to be incompetent to try that particular suit or issue. Rather, it does conduct the trial and takes the objections and the evidences of parties. But once the foreign judgment is proved to be genuine, the foreign judgment will become conclusive upon the issue which was decided therein. That is, now the opposite party will not be allowed to lead evidences to disprove the fact. For instance, अभी ये एग्जाम्पल आपने लिखा है जो मैंने बताया था अभी. For instance, in the above example, in the suit in India filed by W for RCR, RCR is restitution of conjugal right. In the suit in India filed by W for RCR, the husband may take the plea that he is no more a lawful husband to wife, as he has already obtained divorce, and in support of his plea, he may produce the certified copy of the foreign judgment. The petitioner's wife may challenge the authenticity of the certified copy, or she may challenge the jurisdiction, etc. of foreign judgment as provided in section 13. And the Indian court will conduct a hearing in this regard, and if it comes to the conclusion that there was no such defect in the foreign judgment, then the foreign judgment will become a conclusive proof with respect to the issue of divorce, and now the petitioner's wife will not be allowed to prove evidences to revert that fact. ठीक, तो ये पहला पॉइंट था. अब दूसरा पॉइंट लिखिए. Second point, foreign judgment applies as a conclusive proof only upon those matters which have been directly adjudicated upon by the foreign court. This implies that if an issue was matter directly and substantially in issue in the foreign court but was not raised, then on such issue, since there is no direct adjudication, section 13 will not apply. Thus, constructive res judicata kind of concept does not apply under section 13. ठीक, मतलब जो मैटर्स डायरेक्टली
रेज किए गए थे उन पर सेक्शन 13 लगेगा। जो मैटर रेज करने चाहिए थे लेकिन नहीं किए गए उन पर सेक्शन 13 नहीं लगेगा। अनलाइक सेक्शन 11 वेयर रेज जुडिकाटा applied upon the implied और constructive issues also। अब नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखिए आप, सेक्शन 13 is more of a rule of evidence as it relates to a conclusive proof of a foreign judgment। ठीक, now you have understood what is meant by conclusive proof and what is directly adjudicated। अब देखो सिचुएशन ये है, दो लोग फॉरेन कोर्ट में एक सूट कंटेस्ट करते हैं जिसमें कुछ इशूज थे, डायरेक्टली रेज किए गए इशूज, उसका फॉरेन कोर्ट ने आपका हियरिंग डिसाइड कर दिया। अब द सेम मैटर दैट नाउ इज फाइल्ड इन इंडिया, अब आइदर ऑल द इशूज और मे बी सम इशूज आर रेज बिटवीन सेम पार्टीज इन इंडिया एक्टिंग अंडर द सेम टाइटल। व्हेन द सूट इज फाइल्ड इन इंडिया, अगेन when the same issues are raised or maybe the sum of the issues are same, will the question of res judicata arises as to will the foreign judgment apply as res judicata upon the Indian court? Answer is no, क्योंकि फॉरेन जजमेंट का रेस जुडिकाटा इंडियन कोर्ट पे नहीं लगता और ना ही रेस सब जुडिस लगता है। तो will the foreign judgment will be of some use, where comes the section 13? So the foreign judgment is of some use to the extent that is it acts on the issues which were directly decided. It acts as a conclusive proof. Now conclusive proof does not mean that the Indian court is not competent to try that issue, but conclusive proof means that Indian court can try that issue, take the evidences of the opposite party regarding the genuineness of the foreign judgment, etc. But once that conclusive proof is proved, thereafter the opposite party will not allow evidences. Thereafter opposite party's evidence will not be allowed for the rebuttal of that fact। ठीक, this is what we conclusive proof। कंपिटेंसी पे कोई बार नहीं है। ठीक, अब जो वाइफ है, जो मेरे एग्जाम्पल में वाइफ थी, इसमें आगे चल रहे हैं, मैंने जो एग्जाम्पल दिया था उसमें जो वाइफ थी वो क्या क्या ऑब्जेक्शन ले सकती थी। इसमें कुछ लिखवाया भी आपको कि एक तो वो ऑब्जेक्शन ले लेगी कि वो जो डॉक्यूमेंट में जेन्युइन नहीं है, सर्टिफाइड कॉपी जेन्युइन नहीं है, क्योंकि फॉरेन कोर्ट का जजमेंट आप प्लेन पेपर तक लेके आओगे नहीं। इट इज द फॉरेन कोर्ट, सो ऑब्वियसली यू नीड टू हैव a certified copy of the foreign judgment, and in that regard section 86 of Evidence Act will raise presumption also. So wife can always go on to disprove the genuineness of the certified copy, and for that she will prove evidences। तो कोर्ट ये प्रिज्यूम कर लेगा दैट जेन्युइन कॉपी, इट इज जेन्युइन कॉपी, तो वाइफ को उसको डिस्प्रूव करना होगा। So one thing she can do is she can contest the genuineness of the certified copy। लेकिन मान लो genuineness of the certified copy prove हो गया, then what other objection she can raise? तो वहाँ पर clauses A to F, ये 6 clauses हैं जिनके अंडर कहा गया है कि she can challenge the conclusivity of the foreign judgment। मान लो ये प्रूव कर दे कि फॉरेन कोर्ट ने जजमेंट पास किया लेकिन हम में से किसी ने एविडेंस रिकॉर्ड नहीं करवाया या बिना सुने ही उसने जजमेंट पास कर दिया। मीन्स व्हाट? इट इज द वायलेशन ऑफ द नेचुरल जस्टिस एंड देयरफॉर द फॉरेन जजमेंट विल नॉट बी कंक्लूसिव। ऐसे इफ शी प्रूव्स दैट द फॉरेन कोर्ट डज नॉट हैव द जुरिडिक्शन टू ट्राई द सूट, then the foreign judgment will not be conclusive. And if she proves that the other party obtained the judgment by committing a fraud upon the court, if she proves, then also it will not conclusive. So it means she is having so many grounds on which she can challenge the conclusivity of the foreign judgment,
ठीक, पहले तो वो चैलेंज करेगी जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। अब वो अगर सक्सेसफुल नहीं हुआ देन शी विल चैलेंज द conclusive character of the foreign judgment by proving either of those elements given in section 13. Now if she fails in all that, then the foreign judgment will be conclusive, and after that rebuttal is not possible. तो अब जो आप नेक्स्ट समझना है वो ये कि फॉरेन जजमेंट के सर्टिफाइड कॉपी के बारे में जेन्युइननेस का क्या प्रिजम्पशन है, और 1 by 1 ये ज्यूरिडिक्शन, मेरिट्स, इन सब का क्या मतलब होगा, दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड। तो ये सारा हो जाए फिर उसके बाद आप जाओगे फॉरेन जजमेंट का एग्जीक्यूशन कैसे होता है। नाउ सी एविडेंस एक्ट का सेक्शन 86, लेकिन उससे पहले सेक्शन 77 पढ़ लो एक बार। सेक्शन 77, सच सर्टिफाइड कॉपीज may be produced in proof of the contents of the public document or parts of the public document of which they purport to be copies. So they are talking about the public document and judgment is a public document. तो किसी कोर्ट के जजमेंट के लिए आप सर्टिफाइड कॉपीज प्रोड्यूस कर सकते हो। You have to prove a judgment. If you have to prove a judgment, then you can always produce उसका सर्टिफाइड कॉपी। So that is the main declaration. अब इसके बाद आप जाएं section 86 में। So in section 86 they are saying the court may presume, may, shall नहीं लिखा है, जिस कोर्ट का डिस्क्रिशन है प्रिज्यूम करने का, they are not writing the court shall. The court may presume that any document purporting to be a certified copy of any judicial record of any country not forming part of India or of Her Majesty. जो हर मजिस्ट्री मतलब जो ब्रिटिश रूल में था इंडिया, तो क्वीन का जो डोमेन था, of Her Majesty's dominions is genuine and accurate if the document purports to be certified in any manner which is certified by the representative of the central government in or for such country to be the manner commonly in use in that country for the certification of copies of judicial records. तो वो कह रहे हैं सीधा कि अगर किसी फॉरेन जजमेंट का आप सर्टिफाइड कॉपी लाते हो एंड द कोर्ट फाइंड्स दैट इट वाज नॉर्मल सर्टिफाइंग अथॉरिटी और उसी के द्वारा सर्टिफाई किया गया है, जो नॉर्मल सर्टिफाइंग प्रोसेस है उसी के द्वारा सर्टिफाई किया गया है, देन द कोर्ट में प्रिज्यूम दैट द सर्टिफाइड कॉपी इज अ जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी। तो अब अगर कोर्ट अगर प्रिजम्पशन ले लेगा तो रिवर्टल ऑफ प्रिजम्पशन कौन करेगा? अब इन दिस एग्जांपल, माय एग्जांपल, वाइफ इज टू प्रूव दैट इट इज नॉट अ जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी। एन ऑफिसर हु विद रेस्पेक्ट टू एनी टेरिटरी और प्लेस नॉट फॉर्मिंग पार्ट ऑफ India or Her Majesty's Dominion is a political agent thereof as defined in section 3 clause 43 of the General Clauses Act 1897 10 of 1897 shall for the purposes of this section be deemed to be representative of the central government in and for the country comprising that territory of place। ये हमारे काम का नहीं है, मतलब सर्टिफाइड कौन करेगा, जो इसमें बताया सर्टिफाइड कौन करेगा। मेनली यू हैव टू सी इज इफ अ सर्टिफाइड कॉपी ऑफ अ फॉरेन जजमेंट is placed before the court and if the court finds that the document has been purportedly certified by a person who does the normal certification in that country, then the court may presume that it is a genuine record of a foreign judgment. अब देखो यहाँ पर may presume लिखा है तो it would be revertible. अब if the wife wants, अगर wife अगर चाहे तो वो एविडेंस दे सकती है that it is not a proper certification.
फॉर एग्जाम्पल द अथॉरिटी हु सर्टिफाइड इज ए रॉन्ग अथॉरिटी, तो पहले तो इस पर कंटेंशन रेज कर सकती है दैट इट इज नॉट ए जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी। फिर उसके बाद go into the other elements, that is the elements of section 13 of the CPC। तो पहले तो आप इस पे लिखो in the next paragraph, you write in next paragraph, as per section 86 of Indian Evidence Act, as per section 86 of Indian Evidence Act, the court may presume, inverted commas, may presume the certified copy of the foreign judgment to be a genuine record of the foreign judgment if it appears to have been certified by proper authority of that country. However, since it is may presume, write in inverted commas, since it is may presume, the court has the discretion to presume it or not, and if it presumes, the opposite party may produce evidences to rebut the presumption। ठीक, अब कैसे रिबर्टल होगा? बाय प्रूविंग दैट अथॉरिटी इज नॉट द सर्टिफाइंग जेन्युइन अथॉरिटी एक्सेट्रा। तो ये आपका पहला पॉइंट है। अब बेसिक बर्डन ऑफ प्रूफ तो उस पार्टी पर है जो ऑब्जेक्शन रेज करता है फॉरेन जजमेंट का, दैट दिस इज फॉरेन जजमेंट एंड इट शुड बी कंक्लूसिव। तो उसमें वो सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस करता है। अब बर्डन ऑफ प्रूविंग दैट इट इज नॉट जेन्युइन लाइज अपॉन द अपोजिट पार्टी एंड द कोर्ट में प्रिज्यूम, कोर्ट ने प्रिजम्पशन ले लिया, देन द बर्डन शिफ्ट्स ऑन द अपोजिट पार्टी। और कोर्ट ने अगर प्रिजम्पशन नहीं लिया, देन द बर्डन इज ऑन द पार्टी, देयर इज ऑन द पार्टी हु प्रोड्यूस द सर्टिफाइड कॉपी, एंड दैट एवरीवन नोज कि अगर मैंने सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस किया है और कोर्ट ने मेरे फेवर में प्रिजम्पशन ले लिया, तो उस सर्टिफाइड कॉपी के जेन्युइननेस को रिबर्ट करने का बर्डन अपोजिट पार्टी पर होगा। और अगर कोर्ट ने प्रिजम्पशन नहीं लिया, तो उसके जेन्युइननेस को प्रूव करने का बर्डन मेरे ऊपर होगा। ठीक, दैट इज द फर्स्ट पार्ट। उसके बाद सेकंड पार्ट पे जाओ, इसमें थोड़ा सा एक पैराग्राफ लिख लो आप। नेक्स्ट पैराग्राफ, once the above hearing is conducted and the certified copy is proved to be genuine, then the opposite party may question the conclusive character of the foreign judgment by raising any of the grounds under section 13. Once the above hearing is conducted and the certified copy is proved to be genuine, then the opposite party may question the conclusive character of the foreign judgment by raising what? Any of the grounds under section 13. By raising any of the grounds under section 13. Take. Now see the clauses. First clause, except where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. Means the foreign court which pronounced the foreign judgment, it did not have the jurisdiction to try the foreign suit. ठीक, दूसरा, where it has not been given on the merits of the case, तो दोनों पार्टी का हियरिंग नहीं किया, ठीक से नहीं किया, और जुडिशियल माइंड नहीं लगाया और वैसे ही डिसाइड कर दिया। और तीसरा, where it appears on the face of the proceedings to be founded on an incorrect view of the international law or a refusal or recognize the law of India in cases in which such law is applicable. For example, husband वाइफ के बीच शादी हुई थी इंडिया में, फॉरेन कोर्ट में डिवोर्स लेना है, तो फॉरेन कोर्ट में भी डिवोर्स हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही लेगा। फॉरेन कोर्ट भी जो डिवोर्स है हिंदू मैरिज एक्ट की तरह ही देगा, लेकिन फॉरेन कोर्ट ने हिंदू मैरिज एक्ट लागू नहीं किया और अपना मैरिटल लॉ लगाकर उसके बेसिस पर डिवोर्स दे दिया, so that is not permissible. You should apply the law which is applicable between the parties, the Hindu Marriage Act, etc. Then, where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice,
where the proceedings in which the judgment was obtained are opposed to natural justice. फॉर एग्जाम्पल, आपने सम्मन सर्व नहीं किया अपोजिट पार्टी को, उसके एविडेंसेस रिकॉर्ड नहीं किए एक्सेट्रा, या फिर आपने क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं लिया, आपने राइट टू क्रॉस एग्जामिनेशन नहीं दिया. So those are the cases of failure of natural justice. Then where it has been obtained by fraud. One of the party has committed the fraud in the court and you have obtained the judgment. जैसे फॉर एग्जाम्पल दो इंडियंस हैं, अब दोनों के ऊपर फॉरेन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन कब बनेगा, इसको डिस्कस करेंगे हम इसके बाद. फॉरेन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन फॉर एग्जाम्पल एक केस है, वो तब बनता है जब दोनों के दोनों फॉरेन कंट्री में जाकर डोमिसाइल्ड हों, दोनों के दोनों फॉरेन कंट्री में कोर्ट के ज्यूरिडिक्शन में डोमिसाइल्ड हों, तो वहाँ पर फॉरेन कोर्ट का ज्यूरिडिक्शन बन जाएगा. अब मान लो हस्बैंड रहता है फॉरेन कंट्री में और वाइफ को इंडिया में छोड़ रखा है, और वाइफ के ऊपर वहीं पर डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिया और कोर्ट में एक फ्रॉडुलेंट डॉक्यूमेंट फॉर्ज करके डाल दिया दैट माई वाइफ ऑल्सो डोमिसाइल्ड हियर एंड ही ऑब्टेन्ड डिवोर्स फ्रॉम हर. ठीक, तो हियर द फ्रॉड ही हैज कमिटेड इज व्हाट? जुरिडिक्शनल फ्रॉड. जुरिडिक्शनल फ्रॉड मीन्स he has committed a fraud with respect to jurisdiction of the court. उसने गलत जजमेंट लिया है. He is representing to the court that my wife is also domiciled person here whether while she is not. तो उस तरीके से अगर आप फ्रॉड करके जजमेंट ले लेते हो, then also the conclusive proof will not apply. ठीक, and then finally where it sustains a claim founded on a breach of any law in force in India. Now suppose some person has violated some Indian law, और फॉरेन कोर्ट में उस लॉ के वायलेशन के बावजूद that person is making some claim and the court knows that this person has violated Indian law and despite that violation the court granted him relief. मतलब एक तरीके से देखा जाए तो इंडियन लॉ को दबाकर वायलेशन को कोर्ट ने अप्रूव कर दिया कि ठीक है, तुमने इंडिया में कोई भी लॉ, मान लो कॉन्ट्रैक्ट एक्ट वायलेट किया, कोई बात नहीं, हम फिर भी तुमको रिलीफ देंगे. सो एनी सच जजमेंट विच इज रिकॉग्नाइजिंग द वायलेशन ऑफ द इंडियन लॉ, देन दैट जजमेंट विल नॉट बी अप्लाइड इन इंडियन कोर्ट्स एंड देयरफॉर वहाँ पे भी कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा. अब इसमें एक हम कंपेयर करेंगे क्लास सी और एफ को, जो करेंगे अभी बाद में, बट इसमें फर्स्ट थिंग इज ए jurisdiction of a foreign court, first clause, where it has not been pronounced by a court of competent jurisdiction. अगर फॉरेन कोर्ट का jurisdiction नहीं था, then section 13 will not apply. ठीक, अगर फॉरेन कोर्ट का jurisdiction नहीं था उस सूट पे, then conclusive proof will not apply. Now in that regard please read section 14 also. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displayed by proving want of jurisdiction. अब यहाँ पे भी ये लोग presumption ही दे रहे हैं. आपने जब सर्टिफाइड कॉपी लगाया किसी फॉरेन जजमेंट का, जैसे ही आपने सर्टिफाइड कॉपी लगाया, दे आर सेइंग हियर दैट द कोर्ट शैल प्रिज्यूम दैट फॉरेन कोर्ट हैज ज्यूरिडिक्शन. अब द पार्टी इंटरेस्टेड इन प्रूविंग दैट कोर्ट इज नॉट हैविंग ज्यूरिडिक्शन मस्ट प्रोड्यूस एविडेंसेस इन टू प्रूव दैट इट डज नॉट हैव ज्यूरिडिक्शन. तो यही मतलब हुआ इसका. फिर से पढ़ो सेक्शन 14. The court shall presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displayed
displaced by proving want of jurisdiction. Such presumption may be displayed by proving want of jurisdiction. मतलब इंटरेस्टेड पार्टी ने फॉरेन जजमेंट की कॉपी लगाई, सर्टिफाइड कॉपी, एंड इट appears to be the certified copy to the court. अभी सर्टिफाइड कॉपी का जेन्युइननेस प्रूव नहीं हुआ, जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी लगी, इट appears to be certified copy, then the Indian court shall, may नहीं है, shall, mandatory, the Indian court shall presume that foreign court has jurisdiction. The Indian court shall presume that court has jurisdiction. Now 86 में भी presumption होगा. 86 में क्या होगा? The presumption that it is a genuine record. अब वहाँ पर shall नहीं, वहाँ पे may presume. अब यहाँ पे the court shall presume the foreign court have jurisdiction. The court shall presume that the foreign court had jurisdiction. Now in our example, if the wife want to prove that the foreign court did not have the jurisdiction, then the burden was upon her. अब वो प्रूव करेगी कि फॉरेन कोर्ट के पास jurisdiction नहीं था, लेकिन the court shall presume the foreign court have jurisdiction. जैसे ही सर्टिफाइड कॉपी प्रोड्यूस किया, the presumption will be raised. ठीक, अब वो कैसे प्रूव करेगी that the foreign court had jurisdiction or not? अब देखो, फॉरेन कोर्ट का jurisdiction कुछ लिमिटेड केसेस में ही होता है, लिमिटेड सर्कमस्टेंसेस पे। अब हम यहाँ रह रहे हैं तो फॉरेन कोर्ट का jurisdiction कैसे हो सकता है? अब वैसे तो जो कंपनीज के कॉन्ट्रैक्ट वगैरह उन सब पे लगता है फॉरेन कोर्ट का jurisdiction, लेकिन मान लो अब हस्बैंड वाइफ दोनों फॉरेन कोर्ट में जाके, फॉरेन कोर्ट के jurisdiction में जाके डोमिसाइल्ड हो गए, वहीं रह रहे हैं, they obtained the domicile, then the foreign court in this case will have jurisdiction. But if one of them is staying there and other is not, other is in India, but when the court issues summons, the other does not object, rather the other applies to the summons and makes its appearance. तो obviously आपने acquiesce कर लिया, you have submitted to the jurisdiction of the court, then also the court will have jurisdiction. या फिर दोनों फॉरेन कोर्ट में घूमने गए, फॉरेन कोर्ट के jurisdiction में, फॉरेन टेरिटरी में घूमने गए, so they are not domiciled there in foreign country, they are visitor for some time. तो वहीं गए घूमने, वहीं हनीमून मनाने और वहाँ लड़ाई कर ली। फॉर एग्जाम्पल, शादी के बाद हनीमून के लिए गए, मान लो 1 महीने के लिए गए, और जाते ही पहले दिन ही लड़ाई कर ली और वहीं पे दोनों ने डिवोर्स पिटीशन फाइल कर दिए। अब since both of them agreed to the jurisdiction of the court, then the court will have jurisdiction. So these are the some circumstances where the foreign court may have jurisdiction upon Indians. Otherwise, foreign court का jurisdiction कैसे होगा? अब मान लो ये वाइफ प्रूव कर दे कि मैं तो गई नहीं थी वहां रहने, हस्बैंड गया था रहने, he was domiciled there, मैं तो इंडिया में थी, और जब सम्मन आया मेरे पास तो मैंने उसमें ऑब्जेक्शन रेज किया, I did not reply to the summons, I did not acquiesce with its jurisdiction, rather I had objected to the jurisdiction of the foreign court. या फिर she can prove that I never received the summons, मुझे कभी कोई सम्मन मिला ही नहीं, means what, I never submitted to the jurisdiction of the foreign court. So in that way she can prove that the foreign court will not have jurisdiction. So these are some of the examples, but otherwise अगर इनमें से कोई एक प्रूव कर दे तो ये जो presumption है that is rebuttable and the jurisdiction is proved not to be there, and therefore section 13 will not apply and the conclusive proof will not be applicable. ठीक, please write upon this. A foreign court will have jurisdiction upon Indian citizens in the following cases. A foreign court will have jurisdiction upon Indian citizens in the following cases. Number 1, both the parties are domiciled in the jurisdiction of that court in the foreign territory. Number 2, one is domiciled in such territory but the other is not. However, the other has either expressly agreed to such jurisdiction or has acquiesced मतलब silently approved to such jurisdiction. Number 3,
the two parties are not domiciled in such territory, but they are present in the foreign territory and have expressly agreed and submitted to the jurisdiction of the foreign court. To the jurisdiction of the foreign court. Next paragraph. Write down in next paragraph. If it is found that neither of the above circumstances exist, still the foreign court has decided the suit relating to the Indian citizens, it will be said to have acted without jurisdiction. ठीक, तो suppose A and B, अगर if they are the citizens of that foreign court, वहाँ के अगर citizen हो गए हैं तो क्वेश्चन ही अलग है होगा. अगर वो वहाँ के परमानेंट रेजिडेंट हो गए, then it is a different situation. But if they are still the citizen of India, but they are domiciled in foreign territory, both of them, then obviously the foreign court will have jurisdiction. But suppose A is domiciled, B is not domiciled, B is in India. अब या तो B ने एग्री कर लिया कि आप वहाँ पर सूट कर सकते हैं, या फिर जब A ने सूट किया फॉरेन टेरिटरी में और B को सम्मन मिला, then after the summons B does not oppose to the jurisdiction, rather filed the written statement, and in that way acquired the jurisdiction of the foreign court. This can be a situation, or maybe these are not domiciled, but both of them expressly agreed and permitted the jurisdiction of the foreign court. Then in these cases the foreign court have the jurisdiction. अब उसी तरीके से मान लो कंपनीज में एक इंडियन कंपनी और एक फॉरेन कंपनी में कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, then there is a jurisdiction of the Indian courts also and the foreign courts also, unless there is an express agreement that subject to only to the courts of the US, or subject to only to the courts of India, or they may remain silent, means either of these countries' courts have jurisdiction. Now suppose the courts have not had the jurisdiction in these manner and still the court went on to decide. अब जैसे मान लो A ने सूट किया B के ऊपर, A was domiciled in US, और उसने सूट किया B के ऊपर और B ने रिटन स्टेटमेंट में ऑब्जेक्शन रेज किया that you do not have jurisdiction because I am not subject to your jurisdiction, and still the court went on to pass the judgment. Then here you will say that the foreign court not have jurisdiction, क्योंकि इसने अपोज किया था, एक्वाइस नहीं किया था. So in those cases you will say that the court does not have jurisdiction and therefore clause A will apply and conclusive proof नहीं माना जाएगा. तो इसके लिए आप सेक्शन 14 पढ़ो. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of a foreign judgment. The court shall presume upon the production of any document purporting to be certified copy of a foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. So here they are talking about the presumption of the jurisdiction of the court. Presumption of jurisdiction of the court. फिर से पढ़ रहा हूँ. The court shall presume. Shall presume is mandatory. Shall presume and then upon the production of any document purporting to be certified copy of foreign judgment. तो अगर पार्टी ने किसी फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगा दी है कोर्ट में, तो उस पर इंडियन कोर्ट विल प्रिज्यूम दैट द फॉरेन कोर्ट हैव jurisdiction, and that shall presume means it is bound to presume. The court shall presume upon the production of any document purporting to be a certified copy of foreign judgment that such judgment was pronounced by a court of a competent jurisdiction unless the contrary appears on the record, but such presumption may be displaced by proving want of jurisdiction. Means it is a rebuttable presumption. The opposite party can always
disprove the jurisdiction. अब देखो आप याद करो सेक्शन 86। अब जो पार्टी इंटरेस्टेड है उसने फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगा दी। अब हेयर वन ऑब्जेक्शन विल बी विद रेस्पेक्ट टू द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी। विद रेस्पेक्ट टू जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी, अब वहां पर 86 का प्रिजम्पशन होगा विच इज अगेन रिवर्टेबल। ठीक, मतलब इसमें जब अ पार्टी फाइल्स अ सर्टिफाइड कॉपी, द ऑपोजिट पार्टी विल ऑलवेज ऑब्जेक्ट टू द जेन्युइननेस ऑफ द सर्टिफाइड कॉपी and there the presumption of the court in favor of the other party will apply under section 86। फिर इसको रिवर्टल अपोजिट पार्टी कर सकता है। अब मान लो इसका रिवर्टल अपोजिट पार्टी नहीं कर पाया, मीन्स व्हाट, दैट मीन्स इट इज ए जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी। अगर रिवर्ट नहीं कर पाया अपोजिट पार्टी, दैट मीन्स इट इज ए जेन्युइन सर्टिफाइड कॉपी। अब उसके बाद देयर इज एन अनदर प्रिजम्पशन and there is a presumption of jurisdiction under section 14 that court presumes that it is a genuine certified copy. Since it is a genuine certified copy, then that jurisdiction was there with the court. Now this is also revertible. अब यहाँ पर it shall presume. Now this is also revertible and opposite party can always give evidences for the लैक ऑफ jurisdiction। अब देखो 86 एविडेंस एक्ट में मे प्रिज्यूम है एंड इसमें क्या प्रिज्यूमशन है, दैट द सर्टिफाइड कॉपी इज ए जेन्युइन रिकॉर्ड ऑफ अ फॉरेन जजमेंट। ठीक, ये मे प्रिज्यूम है ना। अब एक आप सर्टिफाइड कॉपी लगाते, मान लो ए और बी का डिस्प्यूट हुआ, अब बी के पास फॉरेन जजमेंट है, उसने फॉरेन जजमेंट की सर्टिफाइड कॉपी लगा दी। Now the court will immediately presume, it may not also, because it is written may presume, so may or may not, but suppose court presume that it is a genuine record, the opposite party not rebut that presumption, suppose the opposite party is not able to rebut। अब मान लो genuineness को rebut ही कर दिया तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, but suppose he is not able to rebut, suppose he is not able to rebut, then what? अगर वो रिवर्टल नहीं कर पाया, then genuineness is presumed। अब the court will also presumed, genuineness तो पहले से presume है, अब the court will also presume, अब the court shall presume that the foreign court had jurisdiction। अब this is also rebuttable, so again he can rebut that presumption and go on to prove that the foreign court do not have jurisdiction। अब अगर उसने प्रूव कर दिया फॉरेन कोर्ट jurisdiction नहीं था तो फिर कंक्लूसिव प्रूफ नहीं होगा, और अगर वो प्रूव नहीं कर पाया तो प्रिज्यूम्पशन तो है ही, तो फॉरेन कोर्ट डिड हैव jurisdiction and therefore it will be a conclusive proof। अब उसके बाद A will go on to prove in some other clause, but at least regarding clause A of section 13 the court have jurisdiction and therefore section 13 conclusive proof will apply। ठीक, तो इसको लिख लो आप, तो इसको आप नेक्स्ट पैराग्राफ में लिख लो। ऑलराइट, when the interested party files the certified copy of the foreign judgment, the opposite party may contest the genuineness of the certified copy। As per the section 86 of Indian Evidence Act, the court may presume, inverted commas में, may presume such genuineness whereupon it is upon the opposite party to rebut that presumption। If the rebuttal does not take place, then the court under section 14 shall presume that the foreign court had jurisdiction to try। However, this presumption also is rebuttable, and if rebuttal is not done, then the court had jurisdiction and therefore the foreign judgment will be a conclusive proof। Why it is conclusive proof? Because section 13A is not proved, and therefore the court had jurisdiction and therefore the foreign judgment का conclusive proof apply करेगा।
So this is the first part. We have seen the presumption of section 86. Then we had seen the presumption of section 14, and section 14 is always read with 13a. When you talk about the jurisdiction, then the presumption of section 14 will apply, and which is revertible. And 86 will always apply with respect to the document, that is a certified copy. Certified copy लगाओगे वहाँ पे उसका presumption हो सकता है. The opposite party will always challenge and prove that it is not a genuine record. ये पहले होगा कि certified copies लगाते ही आप ये objection कर सकते हो, तो certified copies लगाते ही आप ये objection कर सकते हो, और उसके बाद ये आएगा that is 14, जहाँ पर आप jurisdiction का presumption लेते हो. Now we have to move to other clauses. Clause B onwards. From clause B onwards, B, C, D, E, F. ये तो आसान है. We have to look upon these, but we will continue these in the next lecture. That's it for this lecture. Thank you.